everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to calculate the mean deviation about mean in case of individual series, discrete series and continuous series. अब ये mean deviation about median भी करना है, mode भी करना है, ये हम लोग next वीडियो में cover करेगा. आज का वीडियो में सिर्फ mean deviation about mean करेगा. So first you see the formula here. In case of individual series, the formula of mean deviation MD लिखा है. mean deviation is summation modulus, इसको बोलेगा modulus, summation modulus d divided by n. So summation modulus d divided by n is the formula of mean deviation in case of individual series. Now in case of discrete and continuous series, discrete and continuous series, the formula of mean deviation is summation f modulus d divided by n. यहाँ पे f लग जाएगा और यहाँ पे f नहीं है, ये डिफरेंस है. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला सेम है. नेक्स्ट नंबर 3, कोएफिशिएंट of mean deviation, and the formula of coefficient of mean deviation is mean deviation divided by mean x bar, or you can say mean, या फिर अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है. मीन x bar am सेम होगा. तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन करने से हमको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. बट व्हेन यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द mean deviation about median, then your coefficient of mean deviation is mean deviation divided by median. ये चेंज हो जाएगा. And in case of mean deviation about mode, coefficient of mean deviation में होगा mean deviation divided by mode. Clear? Now you see here, ये जो modulus d हम लोग लिख के आ रहे हैं ना, modulus d. So the value of modulus d is x minus mean. x माइनस मीन, ये x माइनस मीन करने से हम लोग को मॉडुलस d मिलेगा. सो द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस d इज x माइनस मीन इन केस ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन. इन केस ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने को जा रहा है, वहां पे मीन x माइनस मीन नहीं होगा, मीडियन हो जाएगा. और अबाउट मोड करेगा तो x माइनस मोड हो जाएगा. क्लियर? एंड वन मोर थिंग यू सी हियर, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, the value of n, here n means number of items. Clear? Number of items, suppose 10 20 30 40 50 है, तो काउंट करना पड़ेगा कितना आइटम है. that is the value of n. but in case of discrete and continuous series, n means summation f, फ्रीक्वेंसी का टोटल करने से हम लोग को यहाँ पे n मिलेगा in case of discrete and continuous series. Clear? तो हम लोग अभी फर्स्ट जो सम्स करेगा, that sums is mean deviation about mean in case of individual series. उसके बाद discrete and continuous. First question is calculate mean deviation about mean and coefficient of mean deviation. तो यहाँ पे हम लोग को जो mean deviation निकालना है वो about mean लेके करना है. and the series is the individual series, क्योंकि जब single line का sums दिया हो रहेगा, then the series is known as individual series. अब वो जो series है वो है mean values, and the mean value is always denoted by x. Clear? So you see here, since mean equal to x1 plus x2 plus up to xn divided by n. This is the formula of mean in case of individual series. And your first step to calculate the value of mean. So you put the value here, 10, 20, 30, 40, 50. n means number of items. 5 आइटम है ना यहाँ पे, 5. It means 150 divided by 5, 30. So 30 is the value of mean. तो हम लोग को अभी मीन मिल गया. अब मीन निकलने के बाद ही मीन डेविएशन निकालना है, क्योंकि अबाउट मीन बोला तो मीन फर्स्ट निकालना पड़ेगा. ओके, सो योर नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले यहाँ x लिखना पड़ेगा. 10, 20, 30, 40, 50. Your first step to calculate the modulus
D here, modulus D निकालना पड़ेगा, and your formula is x minus mean, and your mean is 30, जो अभी हम लोग just calculate करके आए, ठीक है ना? 10 minus 30 minus 20 होगा, but you are required to put only the positive side. Here modulus means negative and positive side ignore. Negative और positive side हम लोग को नहीं देना अगर modulus use करना है, ठीक है ना? That is why यहाँ पे 10 minus 30 minus 20 है, लेकिन हमको यहाँ 20 लिखना पड़ेगा. 20 minus 30 10, 30 minus 0 10 20. Negative sign नहीं use करना पड़ेगा because there is a modulus. Clear? So summation modulus D equal to 60 and your n equal to number of items. Count करना पड़ेगा 5. Clear? Now you see here, since mean deviation equal to summation modulus D divided by n. So this is the formula of mean deviation. In case of individual series, ये हो गया 60, n means 5, 12. This is your mean deviation about mean. Now next step, to calculate coefficient. Coefficient of mean deviation, and here your formula is mean deviation divided by mean. Mean deviation 12, mean अभी हम लोग जो calculate करके आया था, mean equal to 30. So 12 divided by 30. 12 divided by 0.4. So 0.4 is the coefficient of mean deviation and 12 is the mean deviation. About is for discrete series, and the sum is calculate mean deviation about mean and coefficient of mean deviation. And here your series is discrete series because you have the mean value and the frequency. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है marks, and the value of marks are 10, 20, 30, 40, 50, और उसके नीचे लिखा हुआ है number of students, and the number of students are 3, 7, 5, 10 and 15. तो यहाँ पे जो नंबर डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, that is the frequency, और उसके साथ जो दिया हुआ है that is the mean value. It means the combination of mean value and frequency is the discrete series. It means you are required to use the formula of discrete series. Okay, so you see here, ये जो मार्क्स दिया हुआ है, ये मार्क्स हो गया हम लोग का मीन वैल्यू, एंड इट इज डिनोटेड बाय x. नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय f. 10, 20, 30, 40, 50. Here 3, 7, 5, 10 and 50. Clear? Here also your first step to calculate the value of mean, क्योंकि mean deviation about mean करना है हमको, ठीक है ना? So your n is frequency total करना पड़ेगा, n equal to 40. So in case of discrete series, the formula of mean is summation fx divided by n. तो यहाँ पे हमको सबसे पहले fx निकालना पड़ेगा. 10 into 330, 140, 150, 400, and here 500, 750. Okay, इसको टोटल करने से मिलेगा summation fx. तो सीधा ये plus 400. 1470. So 1470 is the sum total of fx, and n equal to 40. Okay. Next, since mean equal to summation fx divided by n, summation fx 1470 divided by n means 40. Okay. So 1470 divided by 40 equal to 36.75. So 36.75 is the value of mean. Then your next step,
to calculate the modulus D, and the formula of modulus D is x minus mean, and here your mean is 36.75. यहाँ से mean निकल जाएगा, you know, x minus mean, x means 10. You see here 10 minus 36.75, माइनस पे आ रहा है लेकिन माइनस यूज नहीं करना, 26.75. क्लियर? अगेन हियर 20 minus 36.75, 16.75, 30 minus 36.75, 6.75, again 40 minus 36.75, 3.25, 50 minus 36.75, 13.25. क्लियर? इसके बाद हम लोग को यहाँ पे f मॉडुलस d निकालना पड़ेगा. f मॉडुलस d, because in case of discrete and continuous series the formula of mean deviation is summation f मॉडुलस d divided by n. लेकिन इंडिविजुअल में समेशन मॉडुलस d by n था, लेकिन यहाँ पे f मॉडुलस d है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द f मॉडुलस d here. तो ये f और मॉडुलस d मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 3 into 26.75, 80.25, 7 multiplied by 16.75, 117.25, 5 into 6.75, 33.75, 10 into 32.3.25, 32.5, 15 into 30.25, 198.75. क्लियर? अब इसको टोटल करने से मिलेगा समेशन f मॉडुलस d, समेशन f मॉडुलस d 80.25 plus 117.25 plus 33.75 plus 32.5 plus 198.75, 462.50. क्लियर? ये हो गया समेशन f मॉडुलस d. Now next step, put the formula of mean deviation, summation f modulus d divided by n. So summation f modulus d 462.5 divided by n means frequency total जो 40 लिखा है मेरे पास, ठीक है ना? It means your value is divided by 40. 462.5 divided by 40, 11.5625. Okay, ये हो गया mean deviation, about mean. Now next step, to calculate the value of coefficient of mean deviation. Since coefficient of mean deviation, and your formula is mean deviation divided by mean, and your mean deviation is 11.5625 divided by mean, and your mean is 36.75. 11.5625 divided by 36.75, 0.3146. So this is the value of coefficient of mean deviation, and 11.5625 is the value of mean deviation about mean in case of discrete series. This is for continuous series, and here you are required to find the value of mean deviation about mean and coefficient of mean deviation. So see the solution here. Your first item is the marks, और ये जो मार्क्स है ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50.
And your first step here to calculate the mean value and it is denoted by x. अब ये दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 0 plus 10 divided by 2 5. Again here 15, 25, 35 and 45. Next, number of students, that is the frequency f. अभी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, 7, 5, 10 and 15. Okay. Now you are required to calculate the mean first. So the formula of mean is, in case of continuous series, a plus summation f d dash divided by n into c. तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले d निकालना पड़ेगा. d equal to x minus a. a का मतलब होगा assume mean and assume mean is middle term from the mid value. Mid value का जो middle value है, mid value का जो middle term है ये लेना पड़ेगा. So a equal to 25. So here you see 5 minus 25 minus 20 minus 10 0 10 and 20. और यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ मॉडुलस डी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इग्नोर. वहां पे ही नेगेटिव नहीं होगा लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आकर से यूज करना होगा. नेक्स्ट डी डैश इक्वल टू डी बाई सी एंड योर सी मीन्स कॉमन. सी मीन्स कॉमन और ये डी सीरीज में सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा पॉजिटिव नंबर वो दैट इज द वैल्यू ऑफ सी. सो सी इक्वल टू 10. सो डी डैश इक्वल टू डी बाई सी माइनस 20 by 10 minus 2 minus 1 0 1 and 2. This is the value of d dash. Next step to find the value of f d dash. ये f और d dash को मल्टीप्लाई करने से f d dash मिलेगा. 3 into minus 2 minus 6, 7 into minus 1 minus 7, 0 10 again here 30. Now you see the formula of mean. X bar equal to a plus summation f d dash divided by n into c. Now you put the value here. A means you see a 25 plus summation f d dash. इसको टोटल करना पड़ेगा. Summation f d dash. So summation f d dash is t minus t 27. Summation f d dash. So summation f d dash 27. N means frequency total 40 into c. C means yeah 10. Okay. 25 plus 27 into 10 divided by 40. 6.75. 31.75. So this value 31.75 is the value of mean. ये mean निकल गया. अब हमको यहाँ पे mean deviation निकालना है. अब ये mean deviation निकालने के लिए सबसे पहले मॉडुलस d निकालना पड़ेगा. The first step here, in case of mean deviation, to calculate the modulus d, and the value of modulus d is x minus x bar, mean, you know, or ये mean x bar, and your mean is 31.75. X minus mean, x means what? X means 5 here. 5 minus 31.75, 26.75. Again 15, x minus 31.75, 16.75. Clear? Again x 25 minus 31.75, 25 minus 31.75, 6.75. Next 35 minus 31.75, 35 minus 31.75, 3.25. Again 45 minus 31.75, 13.25.
13.25 क्लियर। नेक्स्ट FD डेज निकालना पड़ेगा बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन इज समेशन F मॉडुलस D by N। इसलिए हमको यहाँ पे F मॉडुलस D निकालना पड़ेगा, F मॉडुलस D। सो योर F here and मॉडुलस D मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 multiplied by F मॉडुलस D into 26.75 80.25 again 7 into 16.75 117.25 5 into 6.75 5 into 6.75 33.75 10 into 3.25 32.5 15 into 13.25 15 multiplied 0.25 198.75 198.75। अब ये टोटल करने से मिलेगा समेशन F मॉडुलस D 32.5 462.50। So this is the value of summation F modulus D. Since mean deviation equal to summation F modulus D divided by N, so summation F modulus D 462.5 divided by N means 40. 462.5 divided by 40 11.5625. Next, coefficient of mean deviation equal to mean deviation divided by mean, and your mean deviation is 11.5625 divided by mean, and your mean is 31.75 divided by 31.75 0.36417. So this is the value of coefficient of mean deviation, and mean deviation about mean is 11.5625.